Hello everyone. In this tutorial, we are going to learn about PyTorch. तो ये लोगो देख के ही समझ में आ गया होगा PyTorch हम डिस्कस करने जा रहे हैं और PyTorch बहुत इंपॉर्टेंट है. So it is one of the most popular and flexible deep learning frameworks available. And to learn this PyTorch, what we will do, we'll break down into three stages. First, we have to understand the core building blocks, that is tensors and autograd. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम डिस्कस करेंगे सभी को, ठीक है. Then building a neural network structure and running a practical training loop. तो ये क्लास में हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी करेंगे, इसका इनसाइड डिटेल्स भी हम डिस्कस करेंगे. तो ये है PyTorch. आप देख रहे हो यहाँ पे डेटा लोडर्स, Tensors, Autograd and nn.Module. ठीक है. टाइपिकल वर्क तो इसका ये रहता है कि डिफाइन मॉडल, प्रिपेयर डेटा, फॉरवर्ड पास, कंप्यूट लॉस, बैकवर्ड स्टेप, ऑप्टिमाइजर स्टेप. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसका कोर ब्लॉक से, दैट इज टेंसर्स एंड ऑटोग्रेड. एवरीथिंग इन PyTorch revolves around tensors. अब tensors क्या है? We can think them as multi-dimensional array, just like NumPy. NumPy हमने डिस्कस किया था, याद होगा आप लोगों को. But with the ability to run on GPUs and automatically calculate mathematical gradient, right? So tensors, the AI data workers, ठीक है. यहाँ आप देख सकते हो कि tensors एक core part है. So at the absolute center of PyTorch is the tensor. If you have spent any time with NumPy, you have already halfway there, because tensor is nothing but like I just said, this is a what? Multi-dimensional array. But it comes with critical superpower because it can run on CPUs for absolutely massive speedups. So you can think tensor as a smart container for your data. It could hold a single number, a scalar, a list, vector, a table, a matrix, and or something with even more dimensions. And that lets tensors represent just about anything from a single input value to the complex weights of a neural network layer. तो ये कंटेनर की जैसे आप समझ सकते हो, जो एक सिंगल नंबर मतलब स्केलर को होल्ड कर सकते हैं, लिस्ट को होल्ड कर सकते हैं. लिस्ट क्या है? वेक्टर है, क्योंकि उसका वैल्यू के साथ साथ उसका डायरेक्शन और उसका इंडेक्सिंग भी होता है, राइट. टेबल और जिसमें आपका बहुत ज्यादा डायमेंशन हो, इस सबको वो कंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है. नाउ द रियल मैजिक हैपेंस व्हेन यू पुश दिस टेंसर्स of hardware GPU. जब हम इसको GPU में push करते हैं, an operation that chugs along for seconds on a CPU can be done in milliseconds, and that acceleration is precisely how we train deep learning models without waiting forever. तो समझ में आ गया टेंसर्स क्या है? टेंसर्स आर द फंडामेंटल डाटा स्ट्रक्चर्स इन PyTorch. It is very important. Tensors are the fundamental data structure in PyTorch. They are multi-dimensional arrays optimized for high performance numerical computations, especially on GPU. ठीक है, यही इसका सुपर पावर है, ये GPU में रन होता है, राइट. एंड that is very much essential for modern deep learning. अब टेंसर समझ में आ गया, फिर से बोलो टेंसर कंटेनर के जैसे है, इसको आप मल्टी डायमेंशनल एरे समझ सकते हो, ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज ऑटोग्रेड. क्या बोला मैंने? ऑटोग्रेड, दैट इज द ऑटोमेटिक bookkeeper. So you have got your data loaded into tensors. Now what? Your model needs to learn, right? And this process is known as back propagation. ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा ये, तब नहीं भी सुना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसका. तो ये जो प्रोसेस है, क्या प्रोसेस है? We have got our data loaded into tensor, but now our model needs to learn. ठीक है, ये जो लर्निंग प्रोसेस है, इसको हम बोल रहे हैं back propagation. Means you have to calculate
the gradient of a loss function relative to your model's parameter, right? Trying to do this by hand is a new nightmare of calculus and research a way to introduce bugs, right? तो इसीलिए हम यूज करते हैं AutoGrad, PyTorch ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन इंजन, ठीक है। तो AutoGrad का मीनिंग क्या है आप समझ में आ गया कि ये PyTorch का ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन इंजन है। Autograd is a meticulous bookkeeper. You can run operations on your tensors. Autograd watches and records every single step, right? Every single step. And building a computation graph on the fly. Now, is it time for the model to learn? Users call the dot backward on your loss answer. Autograd instantly stresses its step back for the graph, calculating the gradients for every single parameter that had a hand in the final output. So this defined by run style means the graph is built as your code run and giving you an incredible flexibility. लोग सहज अर्थ में आप समझ सकते हो ये जो ऑटोग्रेड है ये लर्निंग कराते हैं बैक प्रोपागेशन के थ्रू, राइट। अब इसमें जो और एक हम यूज करते हैं दैट इज nn मॉड्यूल। nn मॉड्यूल नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, दैट इज फॉर blueprint of neural network and neural networks, right? So while tensors and autograd are the raw materials, torch.nn model is the blueprint for assembling them into a working model, right? And it is the base class for all neural network model. और जितने भी neural network model है उसका base class क्या है? nn model. From a single layer all the way up to the entire network. Now, when we build a model in PyTorch, we define a class that inherits from nn model. ये हम inheritance का concept use कर रहे हैं, ठीक है। हम जो भी define करेंगे मॉडल ये actually inherit किया जाएगा nn model से, right? Inside we will define our networks layer like linear convolutional layers, तो हम basic use करते हैं and then lay out how data flows for them in forward method, right? कैसे data flow होगा ये हम दिखाएंगे उसमें, ठीक है। This approach is powerful for a key of reasons like organization. It cleanly packages all your layers, weights, and logic into one self-contained object. Parameter tracking, like any layer you define inside the nn model has its parameter track automatically, means you can easily grab them for optimization without having to hunt them down yourself. And GPU management, very important. Moving your model to a GPU is as simple as calling the device. PyTorch takes care of every associated parameter overflowing. So हमने देखा how does PyTorch work? Get data ready, install into Tensors, right? Tensors में रखा, Tensor PyTorch का data structure समझ सकते हो, container समझ सकते हो. Then build or pick a pre-trained model to suit your problem. Pick a loss function or an optimizer, build a training loop जो हम करते हैं कैसे AutoGrad से. Build a model to the data and make a prediction, evaluate the model, improve for experimentation, and save and reload our trained model. So PyTorch provides a robust and straightforward workflow that reflects the typical process of addressing a machine learning challenge. With the help of this workflow, we can get simple and straight line. However, the steps of workflow can be repeated and changed. It will completely depend on the problem that we are facing. First, preparing the data, as I have said. Data is where everything starts. PyTorch enables you to handle multiple data types ranging from images and text to audio and tabular formats. To keep each step, we'll begin the synthetic data, right? Then creating a model, adjusting the model to the data, forecasting and assessing a model, and then saving and loading and completing the completely. So इसके लिए हम एक बेटर होगा कि मैं एक प्रोग्राम ही दिखा देता हूँ लोगों को. Simple example. ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये जो ऑटोग्रेड लर्निंग प्रोसेस करा रहे हैं तो इम्पोर्टेंट क्या है, ये ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन कराते हैं
Instead of doing calculus by hand to update the neural network switch, PyTorch tracks your match operation. So ये program हमने बनाया है, just loading it in the Colab. आप देख सकते हो, इसका नाम ही लेके रखा है मैंने, PyTorch tutorial. तो इसको रन किया, import torch को import किया हमने, then create a tensor and tell PyTorch to track its gradient. The tensor हमने create किया, torch.tensor 3.0 requires grad 2, define a simple function जैसे कि y equal to x square, then इसका gradient calculate किया, right? Break propagation, then check the derivatives divided dx at say 3. तो ये क्या होना चाहिए, twice x होगा तो 2 to 3, that is should be 3. तो ये एक सिंपल सा फंक्शन प्रोग्राम हमने दिखाया है. इसका जो है जस्ट ए मिनट, हाँ, इसका जो है वी हैव जो टॉर्च, कैसे टॉर्च को तो यूज करना ही पड़ेगा. जस्ट ए मिनट, हाँ, आई जस्ट नीड टू इट. ओके, ठीक है. तो इसका हम फिर से एक बार डिस्कस करते हैं. इंपोर्ट टॉर्च हमने किया, राइट? PyTorch को इंपोर्ट करने के लिए आप नेक्स्ट डिफाइनिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रिक्वायर्स ग्रेड 2. तो x is equal to torch.tensor 3.0 requires grade 2. इसका मतलब क्या है? By setting requires grade 2, we tell PyTorch to build a dynamic computational graph tracking every mathematical operation applied to this tensor. ठीक है? In neural network terms, we can say x like a what? Weight or bias parameter that needs optimized. तो एक डायनेमिक कॉम्पिटिशनल ग्राफ ट्रैकिंग को बिल्ड करने के लिए हमने लिखा रिक्वेस्ट ग्रेड इक्वल टू ट्रू. ठीक है, समझ में आ गया? तो ये दिस इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल. देन हमने ग्राफ को बिल्ड किया, द फॉरवर्ड पास x y इक्वल टू x स्क्वायर. When we square x, the PyTorch record this operation in a directed acyclic graph. Tag के बारे में हम CS वालों को सब लोगों को पता ही होगा क्या है directed acyclic graph. Then here जो है x क्या है? X is a leaf node and y becomes the root node, which holds an internal pointer grade fn pointing to a power operation that is called backward. ठीक है? Then back propagation, y dot backward. The backward first. When we call this backward, PyTorch tracks backward for a graph starting at y. So ये backward move होगा. It applies the same rule of calculus to compute the derivative of y with respect to every tracking variable that contributed to it. So mathematically ये जो है derivative of y is equal to x square, ये इसमें ध्यान मत देना, ये let x का है. तो y is equal to x square is fractional dy dx, that is twice x. X square का derivative obviously twice x होता है. अब ultimately extracting the result, point x plus rate dot item, that is 6. So PyTorch calculates the derivative of the exact value of x. Resulting is 2 times 3.0, that is 6. So ये calculate हो गया. And then finally ये क्या करते हैं? PyTorch stores the final derivative value inside the plot grad attribute of the original tensor x. So grade attribute में ये value final derivative का value रख देते हैं आपका. Then so in a full network training loop, the optimizer uses this exact value in x dot grade to adjust the models which cover the total loss. तो ये सिंपल प्रोग्राम से हमने बहुत कुछ सीख लिया. पहले तो आपको PyTorch को इंपोर्ट करना होगा, उसके बाद आपने टेंसर को डिफाइन किया, टेंसर, ठीक है, टेंसर को क्रिएट किया और रिक्वेस्ट ग्रेड को ट्रू किया ताकि एक डायनेमिकली कॉम्पिटिशनल ग्राफ ट्रैकिंग आप बुल्ड कर पाओ. तो सिंपल फंक्शन को डिफाइन किया, ग्रेडियंट को कैलकुलेट किया, बैकवर्ड और बैक प्रोपगेशन के जरिए उसके बाद वैल्यू को कर लिया. नाउ ये प्रोग्राम हो गया. नेक्स्ट आते हैं हम बिल्डिंग ए न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर. आई होप यू ऑल नो अबाउट न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर. तो इसको अभी हम देखते हैं पहले. तो टू इन PyTorch व्हेन वी बिल्ड न्यूरल नेटवर्क्स बाय सबक्लासिंग nn.Module. तो इसके लिए हम यूज करते हैं nn.Module. वी नीड टू डिफाइन लेयर्स इन इनिट and outline how the data flows for them in the forward function. तो न्यूरल नेटवर्क तो क्या होता है आपका?
it's a actually connected layers, right? And it behaves like a human, being inspired from the human network concept, human neuron concept. तो यहाँ पे आपका देख सकते हो मल्टीपल लेयर्स की बात करते हैं हम, इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स एंड आउटपुट लेयर। इनपुट लेयर जहाँ से आपका इनपुट आते हैं, वेट के थ्रू उसको हम से कुछ करते हैं वैल्यूज। देन फुली कनेक्टेड लेयर्स, these are the hidden layers, partially connected, and then output layers. Input layers, hidden layers, and then fully connected and partially connected layers. तो एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एग्जांपल, बेसिक क्लासिफायर स्ट्रक्चर। ठीक है, आप देख सकते हो ये प्रोग्राम को भी मैंने यहाँ पे कोलैब में रन किया है। import torch.nn as nn class simple classifier nn.Module, nn.Module से हमने लिया है। मैंने बोला था ना, ये जितने भी हम क्रिएट करेंगे वो आपका इनहेरिटेंस का यूज करेंगे, बेस तो यही है nn, और उसे हम अपना जो क्लासिफायर होगा उसको क्रिएट करेंगे, राइट। और इनिशियल मेन आपका इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो, सेल्फ इनपुट टाइम dimension, hidden dimension, output dimension, super simple classifier, self init, self layer 1, and then layer input dimension, hidden dimension, self dot relu, and then dot relu, self dot layer 2, and then dot layer hidden dem, and output dem, मतलब आपका dimension, self sigmoid, sigmoid function हम use किया है, forward self dot x, x self dot layer 1, self dot relu x, self dot layer 2, self dot x sigmoid, return x. Instantiate a model, 2 inputs, 4 hidden layers, 1 output binary. Prediction, model simple classifier, input dimension 2, then dimension 4, output dimension 1, training model. ठीक है, तो ये हमने एक सिंपल सा क्लासिफायर को डिफाइन किया, राइट। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनिट क्या है, इनिट डिक्लेयर्स दिस कंस्ट्रक्टर। इनिट तो सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर है। This constructor declares what tools and layers exist in the network. Super init registers the class with the PyTorch so that it can automatically track and update the model's weight during the training. And then the linear, input dimension, hidden dimension. The input layer, it takes your raw input features, 2 inputs, and projects them into hidden space, as for example, 4 neurons using matrix multiplication. Relu, an activation function, it introduces non-linearity by turning all negative numbers into zeros. Without this, the network cannot learn complex patterns. So, हमने Relu use किया activation function जो कि non-linearity ले आते हैं. Then nn.linear hidden dimension output dimension. The output layer, it compresses the 4 hidden features down to the final target size. Sigmoid, the squashing function, it forces the final output to fall strictly between 0 and 1. रिलू के थ्रू हमने नॉन लिनियरिटी लाया था और सिग्मोइड के थ्रू क्या किया, जो फाइनल आउटपुट जो है 0 and 1 के बीच अंदर होना चाहिए, टर्निंग इट इनटू क्लीन परसेंटेज एंड प्रोबेबिलिटी फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। हम डाटा पाइपलाइन अगर देखेंगे फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड मेथड डिफाइंस हाउ डाटा फ्लोज for components, it connects the layers sequentially like an assembly line. This is saying आपका input data to features, self.layer1 linear calculation, self.relu removes negative value. relu जो हमने activation function यूज किया है, जो नॉन लिनियरिटी डाटा है, और वो क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज को बता देते हैं। self.layer2 it maps to one final output neuron. self.sigmoid it converts the output with 0, 1 probability and final prediction, right? So instantiation model, simple classifier, input dimension 2, hidden dimension 4, output dimension 1. So ये क्या किया है, this is a blueprint. So to life, it brings the blueprint to life. It creates a network specifically tailored to look 2 inputs, study hours and attendance, and pass them into 4 hidden nodes to process patterns and output 1 single probability, that is chance of passing. So practically हमने एक बनाया import, देख सकते हो ये नेक्स्ट जो प्रोग्राम है, लेट मी गो टू दैट। तो import torch.nn as nn, import torch.optim as optim। फर्स्ट हमने सिंथेटिक डाटा सेट बनाया 100 सैंपल्स का, 2 पीसेस रहेगा इसमें। x train torch.random 100,2, राइट। ट्रू लेवल्स के लिए हमने क्या किया, ये if the sum of the features is greater than 0, level is 1, else 0.
Y train, X train dot sum dimension 1, keep dimension 2 greater than 0. So now instantiate here model simple classifier to dimension 2, then dimension 4 up to dimension 1. Criteria nn.BC loss, that is binary cross entropy loss for 0, 1 classification. Optimizer optim.sdt model parameters LR 0.1. Training loop epochs हमने define किया 200, ठीक है, 200 हमने define किया epoch. But से मुझे याद आया कि दो तीन पॉइंट आप लोगों को याद करना चाहिए, जैसे स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट एसजीडी. ये क्या होता है? एक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम होता है यूज ट्रेन मशीन लर्निंग algorithms. The job of this algorithm is to find a set of internal mode parameters that perform well against some performance measures such as logarithmic loss or mean squared error. Optimization is a type of searching process that we can think of the search as learning. The optimization algorithm is called gradient descent. And here gradient का मतलब होता है, gradient refers to the calculation of an error gradient or slope of error, and descent means moving down to along that slope towards some minimum level of error. ये algorithm iterative होता है, means the search process occurs over multiple discrete steps, each step hopefully in slightly improving the model parameters, and it involves using the model with a current set of internal parameters to make a prediction or some simples, comparing the prediction to the real expected outcomes, calculating the errors using the error to update the internal model parameters. So this update procedure is different for different algorithm, but in case of ANN, the big propagation update algorithm we use. So big propagation हमने discuss किया था. But now हम patches and epochs के बारे में जाएंगे. तो आपने देखा stochastic gradient descent क्या होता है? एक optimization algorithm होता है, ठीक है. इसका main काम ही क्या होता है? एक प्रकार का learning होता है. यहाँ पे gradient का मतलब error को कैलकुलेट करना, और डिसेंट का मतलब होता है उसको मिनिमम लेवल ऑफ एरर में ले आना. और ये जो प्रोसेस होता है इसमें हम बैक प्रोपागेशन करते हैं. और सैंपल मतलब होता है सिंगल रो ऑफ डाटा. इट कंटेन्स इनपुट दैट आर फेड टू द एल्गोरिथम एंड आउटपुट दैट इज यूज्ड टू कंपेयर द प्रेडिक्शन एंड कैलकुलेट एन एरर. Training data set is comprised of many rows of data, as for example, many sample. A sample may also be called as an instance, an observation, an input vector, or a feature vector. So sample आप समझ सकते हो single row of data. Batch क्या होता है? Batch size is a hyperparameter. Hyperparameter बहुत important होता है, काम याद रखना है हमें. A batch size is a hyperparameter that defines the number of samples that work for updating the internal model parameters. So we can think batch as a for loop iterating over one or more samples and making prediction. At the end of the batch, the predictions are compared to the expected output variables and the error is calculated. From this error, the update algorithm is used to improve the model and move down to an place where error is less, right? Move down along the error gradient. तो एक ट्रेनिंग डाटा सेट को हम एक से या उससे ज्यादा बैचेस में डिवाइड कर सकते हैं. When all training samples are used to create one batch, the learning algorithm is called batch gradient descent. The पूरा हम यूज करेंगे. When the batch is the size of one sample, the learning algorithm is called stochastic gradient descent. एक सैंपल होगा तो बेस का साइज एक सैंपल होगा तो हम इसको बोलते हैं stochastic gradient descent. When the batch size is more than one sample and less than the size of the training data set, the learning algorithm is called mini batch gradient. So batch gradient descent, batch size is equal to size of the training set. Batch gradient descent, where batch size is equal to size of the training set. Stochastic gradient descent, where batch size is equal to 1. Difference here. Batch gradient descent में बैच साइज ट्रेनिंग सेट के बराबर होता है. स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट में बैच साइज 1 होता है. मिनी ग्रेडियंट डिसेंट में, मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट में बैच साइज 1 से ज्यादा और साइज ऑफ द ट्रेनिंग सेट से कम होता है, ठीक है. मिनी केस में मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट केस में पॉपुलर बैच साइज होता है आपका 32, 64, 120 सैंपल्स. तो ये सब हम यूज करते हैं. व्हाट इफ द डाटा सेट डज नॉट डिवाइड इवनली बाय द बैच साइज? देन दिस कैन हैपन in while training a model, means that the final batch has fewer samples than the other batches. Alternatively, what we can do, we can remove some samples from the data sets, change the batch size, that the number of samples in the data sets that's defined by the batch size. अब epoch में आते हैं. epoch क्या है? The number of epochs is a hyperparameter. जैसे batch epoch एक hyperparameter था, epoch भी hyperparameter है.
जो कि डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ टाइम्स दैट द लर्निंग एल्गोरिथम विल वर्क फॉर द एंटायर ट्रेनिंग डाटा सेट। सो वन इपोक का मतलब क्या होता है? वन इपोक मीन्स दैट ईच सैंपल in the training data set has had the opportunity to update the training model parameters, and epoch is comprised of one or more batches. For example, you can say an epoch that has one batch is called the batch gradient descent algorithm, right? तो epoch में क्या होता है? Each sample in the training data set opportunity to update the internal mode parameters, and ये पूरा कितने नंबर ऑफ टाइम्स एल्गोरिथम जो है हमारा ट्रेनिंग डाटा सेट के ऊपर हम रन कराते हैं. You can think this as of for loop, number of epochs where each loop proceeds over a training data set. Within this for loop is another nested for loop that iterates over each batch of input, where one batch has the specified batch size, number of samples. The number of epochs in traditionally large, often hundreds and thousands. Generally, हम ज़्यादा लेते हैं, so allowing the learning algorithm to run until the error from the model has been sufficiently minimized. हम ज़्यादा इसलिए लेते हैं ताकि जो error है वो minimize हो पाए. We may see this example of number of epochs like 10, 500, 1000 like that. यहाँ पे हमने epochs 200 लिया है, ठीक है? मॉडल को ट्रेन किया, फॉरवर्ड पास, प्रेडिक्ट आउटपुट टू प्रोडक्ट गिवन, प्रेडिक्शन इज इक्वल टू मॉडल एक्स ट्रेन, ओके, मॉडल को प्रेडिक्ट लॉस कैलकुलेट किया, then reset all accumulated gradients, loss backward, compute new gradients, optimize the step. If epoch plus one is leaving 0 and print progress every 40 epochs, then on a 40 epochs में वो print करा रहे हैं हम, then model evaluate with torch, no grade, new student 1.5, 2.0, high study hours and attendance. उसके बाद प्रेडिक्ट किया उस न्यू स्टूडेंट के लिए पास हो रहा है फेल हो रहा है, आप देख सकते हो, इसको हमने लर्न किया. लॉस देखो 40 में था 0.6704, इपोक 80 में 0.5767, 120 में 0.4197 और सिमिलर 200 में बहुत कम हो गया 0.2427. और प्रेडिक्शन फॉर न्यू स्टूडेंट दैट इज 0.999, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, सो then will pass. इसी तरह हम क्लासिफाई करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं न्यूरल नेटवर्क के. और यहाँ पे हमने यूज किया है PyTorch, सफिशिएंट है. और इसके ऊपर जो हम डिटेल्स डिस्कस करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? तो देख लिया आपने, डाटा कलेक्शन किया, टॉर्च रैंडम 100 सैंपल containing 2 random features, X trained on some ये generate ground targets. If the sum of the 2 features is positive, target is passed. If 0, it fail. Setup किया, and then BCE loss, binary loss, entropy loss, calculates penalty based on how far of the model 0 to 1 probability prediction. So optimization, sockets, gradient descent optimizer, training किया, right? Zero gate, criterion prediction white trend, quantifies the model's current loss, optimizer zero gate, clears out all gradient data from the previous iteration so that they do not accumulate loss, goes backward, runs the backward pass, condition, uses calculates to find out exactly how much weight contributed to the loss, optimizer dot set, not just all the model weights, the direction, then lowers the loss. Inference, model dot eval, such of training specific behaviors to get stable, deterministic prediction, torch dot no grade, turns off the computational tracking, entirety. Then model new students, जो new को calculate किया, ठीक है? यहाँ पे सबसे important था optimizer dot zero grade is the crucial stage. PyTorch accumulates gradients by default. We must clear them at the start of every loop. तो इसको start करेंगे, उससे पहले हम उसको clear कर लेंगे. Loss dot backward computes the partial derivative of the loss function with respect to your weight. Optimizer dot step pick the internal parameter based on the computed gradients to make the model smarter. तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट. इसमें हमने पाइटॉर्च के बारे में पढ़ा, ठीक है? पाइटॉर्च का दोनों इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज टेंसर जो कि एक डाटा स्ट्रक्चर है, मल्टी-डायमेंशनल एरे है, ठीक है? और ऑटोग्रेड जहाँ पे लर्निंग होता है, ऑटोग्रेड में लर्निंग होता है, ऑटोमेटिक बुक कीपर के जैसे हमने बोला, ये ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन इंजन है. एनएन मॉडल न्यूरल नेटवर्क है. बाकी जितने भी हम यूज करेंगे यहाँ से ही हम यूज करेंगे, तो ये यहाँ पे हाईटेक्स यूज करते हैं, ठीक है? ये न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर. तो इतना फर्स्ट क्लास के लिए सफिशिएंट है. इसका डिक में हम जानेंगे, बाकी इतना पहले पढ़ लेना एग्जाम से पहले.